Namaskar, I, Dr. Aditya Khandelwal, welcome you to Forti Women Presents Women Entrepreneur of the Week. Today, we are here with Ms. Sakshi Ahuja, co-founder Planners Inc. So Sakshi, a very warm welcome to Forti Women. Thank you, Aditi. Sakshi, tell us more about Planners Inc. What all do you do, and how you started. Tell us all about it. Okay. See, Planners Inc. is an event management company. In 2015, we started Planners Inc. We actually hail from a corporate background. Me and my husband, we both were bankers before starting Planners Inc. So it's just that sometimes you want to follow your dreams. So this is how this venture came into the picture. So we primarily focuses on corporate events. So when actually Anubhav, my husband, came with this idea that he wanted to start something of his own, and then I asked him that why you wanted to get into events only. He said it's more of a creative line where you come across with a lot of different people, a lot of different companies, and a lot of other things, right? So in net, if I talk about how you gather one event, there are a lot of things that goes behind that event. See, होता क्या है आदित्य, जब भी आप कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो there are a lot of things that you plan, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, and there are other things. And then leaving corporate jobs and starting a business is quite a very challenging and a very risky affair. True. So how did you both finally decide that this is what you want to do? See, initially I was not mentally prepared for that. When Anubhav, my husband, told me that I wanted to do something in the events, then I actually told him that why you wanted to leave your settled corporate job and you're already based in Delhi. Now he was actually posted in Singapore. So I thought in another 2 years down the line, we will be shifting our base to Singapore. Then why do you want to shift to Jaipur? Right. So then this thing came in, and we decided that events जो है कि बहुत ही challenging profession है. Actually it's kind of a project. Every new project comes with different environment. And जब हम एक project लेते हैं तो हर project एक project से different होता है, right? Normally अगर हम बात करें corporate events को लेके, लोगों का एक perception होता है कि 2 standees लगा दिए, एक screen हो गया, that's the corporate event. And जब हम जयपुर आए तो जयपुर is predominated by wedding planners. So लोगों का यही था कि अरे weddings को छोड़ के आप corporate events को जाते हैं जो कि बहुत simple होते हैं and all that. But क्योंकि हम लोग दिल्ली से थे and being a banker, I have personally attended lot of events जो हम अपने banks में attend करते थे as an employee and this thing. So जब conferences होती थी इस तरह से, so जो हम होते थे कि उसके पीछे क्या जाता है, banks always जब हम conferences attend करते थे तो पीछे एक बहुत अच्छा experience जाता था अपने employees को special feel कराने का and all that. So वो चीज़ें कैसे होंगी, कैसा होगा, so always शुरू से वो था कि यार अगर ये होता है तो that's very creative. And my sister-in-law basically, she is from events, right? Okay. She was working in Delhi with the renowned event agencies. Okay. So एक normally होता है ना, उनको जब देखते थे कि आज कुछ different हो रहा है, कुछ celebrity manage हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लगता था. And my husband, he is little bit, you can say, he is very creative in terms of काम के लिए. So normally होता था कि अब जैसे हो ना, हमें काम में बहुत monotony आ रही है, same वही client से मिलना, same वही meetings and all that. So he thought कि चलो we'll challenges plus creativity made you start Planners Inc. So that's how. So जब हम इसको लेके जब यहाँ पे आए तो एक आइडिया यही था कि we should do it जैसे हमने देखा है एक प्रोफेशनल वे में, वैसे ही इस चीज़ को करें. Not like, क्योंकि to be very honest अदिति, बहुत ज़्यादा मतलब शुरू में अगर हम बात करें इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता when somebody starts an event agency. People अगर what we have seen is आप घर से भी ऑपरेट कर सकते हो, you don't need to have, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है. And when we came to जयपुर तो वो प्रोफेशनलिज्म हमें लगा कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है. That was lacking here, right? So इसलिए we came with the thought कि जब हम कोई चीज़ शुरू करेंगे we will start with 100% professionalism. उसको वैसे ही करना चाहिए, आपकी टीम उस हिसाब से होनी चाहिए, इसी तरह से आपका working culture, obviously when you want to give a very good culture, working environment to your employees, तो इसीलिए normally होता है ना कि then also you grow, because we and Anubhav cannot do the entire thing. Obviously you need people to support you. It is very important to understand you can't do everything yourself. You have to delegate, right? And you need people to understand. You need people who can actually understand your psyche and can work and take your vision forward. Right? So this is how this came. Okay, so Sakshi, it sounds quite an impressive thing that when in Jaipur everybody was doing weddings, you came up with something so unique. So how do you, how do you differentiate yourself from other event management companies? How is Planners Inc. different from all of them? See, normally जैसे मैंने पहले भी बताया,
वी प्राइमरली डू कॉर्पोरेट इवेंट्स. यूजुअली जब हमारे पास शुरू में वेडिंग्स आती थी, वी यूज टू मतलब आउटसोर्स दोस वेडिंग्स. बट इनिशियली वी थॉट कि व्हाई नॉट डू वेडिंग्स. व्हेन यू आर एन इवेंट एजेंसी, यू नीड टू हैव अ कंबाइंड पोर्टफोलियो. आप ऐसे नहीं कर सकते कि यू आर ओनली डूइंग कॉर्पोरेट इवेंट्स, यू आर नॉट डूइंग वेडिंग्स, राइट? सोशल इवेंट्स, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? बिकॉज यूजुअली क्या होता था, जब हम जिनके कॉर्पोरेट इवेंट्स करते थे, उन्हीं का वो आता था कि यू हैंडल आवर कॉर्पोरेट इवेंट वेरी वेल, सो प्लीज हैंडल आवर वेडिंग बिकॉज you understand our psyche and you understand our needs and taste very well. So that's how we started doing wedding after an year of shifting here. मतलब events करने के बाद में 1 साल बाद हमने wedding शुरू की. जब weddings करना शुरू की तो obviously wedding has its own charm, right? So वो सब शुरू. And corporate events में भी ना there are different things. जैसे मैंने आपको बताया था कि usually एक दो स्टैंडी लगाने से और वो करने से, that is not an event. We are an experiential marketing company wherein you create a brand experience for the clients, right? So वो brand कैसे होगा? For example, अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च है, राइट? तो प्रोडक्ट लॉन्च में क्या इनपुट जाएगा, उस वो ब्रांड किस तरह का है, उसको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो किस तरह से वो करना चाह रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, हाउ डू यू वांट टू प्लान दैट इवेंट, राइट? ऑन ग्राउंड एक्ट, मतलब किस तरह से चीज़ें होंगी. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो प्रोडक्ट लॉन्च हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम an employee engagement thing. Engagement, yes. क्योंकि यूजुअली क्या था, जब जयपुर में हम लोग इस तरह से आए थे कि अरे एम्प्लॉय एंगेजमेंट होना चाहिए, तो उनको लगा कि नॉर्मली जैसे होता है एक गाला डिनर कर दिया जहाँ पे आपकी ड्रिंक्स और वो रहेंगे, दैट इज दैट्स इट. दिस इज थिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट सिर्फ वही है, बट देयर आर अदर थिंग्स आल्सो जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट में that can be enriched to a next level. Yes, which is different. You hired a corporate trainer जो probably उनकी अलग-अलग एक्टिविटीज करेगा, and you will not believe अभी तक हमने इस तरह की चीज़ें की हैं कि सपोज जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशू आ रहा है, वी आर जैसे HR ड्रिवन इवेंट्स अलग होते हैं, मार्केटिंग ड्रिवन अलग होते हैं. जैसे मैं अलग-अलग अगर कैटेगराइजेशन दूँ तो माइस एक्टिविटीज़ होती हैं, इंसेंटिव ट्रिप्स होते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो HR करता है, फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है. सो हर चीज़ अलग-अलग है. तो ऐसा नहीं है कि हर एजेंसी हर चीज़ को कर सकती है. एवरीबडी हैज़ देयर फोटे, राइट? सो वी प्रॉब्ली थॉट इनिशियली दैट जो हमारा फोटे है, जिसमें हम लोग अच्छे हैं, वी विल डू दैट. क्योंकि जब एक चीज़ में आपकी मास्टरी हो जाती है, तब प्रॉब्ली यू वांटेड टू मूव ऑन डिफरेंट थिंग्स. सो यही चीज़ जो थी हमने एक फॉलो की कि जिस चीज़ में हमें लगा कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, वो कस्टमर वो हम क्लाइंट. Plus, I think that was the USP that you created in Jaipur. True. Nobody else is doing, focusing on to these kind of events. Right. It might be wedding, might be central to their business, and these corporate events can be second. But for you, corporate events comes first, and then followed by the weddings, right? Yes. Okay. So that is. So I would like to tell the viewers that if you want to organize such kind of corporate events for your group, for your employees, you can always contact Miss Sakshi Ahuja and her company Planners Inc. So Sakshi, tell us how our viewers can reach you. See, basically we are there. We have a website which is www.plannersinc.in. We are there on Facebook, on all the networks, LinkedIn, Twitter, Facebook handlers. So probably I'll share everything with this. And normally because I probably am into business development for this company. So initially from the beginning we have decided because we were husband and wife, we wanted to make it clear that he probably handles a different role and I take care of a different role. Initially from the beginning my forte has been business development, so I've taken care of that particular thing. So people normally think कि business development तो normally होता है कि जाएं, मिलें, pitch करें and all that, but that's not the case. When we approach a brand, right? For example, XYZ any company, so we understand कि वो किस तरह के events करती हैं, right? We have to do our homework before reaching out to them. कि वो किस तरह का इवेंट्स करती हैं, हम उनको कैसे रीच आउट करेंगे और क्या हम आगे उनके लिए उनको क्या प्रपोजल देंगे. वो इवेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक वो नहीं कर रहे थे, बट प्रॉब्ली वी कैन सजेस्ट दैम कि उनकी ब्रांड के लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी. दैट्स हाउ वी गेट इनटू दिस. So Sakshi, thank you for being here. It was great meeting you. Thank you so much, Aditi. Thank you. It was my pleasure to be here. So we just heard Sakshi Ahuja. We are so proud to welcome Sakshi in Forti Women Wing. And to get your corporate event handled in a corporate manner by a corporate trained people, please do visit Planners Inc.